Good evening, all of you. How are you doing? How's your preparation going on? Like, are you planning to manage? Are you try like the speed with which all other people are going? Are you able to manage that speed? Are you able to match up to that speed? मेरा हमेशा मतलब कहना ये रहता है कि you need not like need not compare yourself with others, but you should always have a grasp कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, और बाकी कंपैरिजन में हमारा मतलब हम कहाँ पर है. You should have fair knowledge regarding this. ठीक है. Just let me tell people that we have started. ठीक है. So regarding the fundamental rights, today we'll discuss about fundamental rights. Let me tell you, related to fundamental rights, prelims में minimum हम एक या दो questions we can expect in prelims, one or two questions, and many a times they ask questions in mains. So related to fundamental rights, there are so many issues are there, because every now and then people will come, people will file PIL, or people like there was a right to privacy debate which was there. Then the more the our democracy progresses, there will be more of such demands, because now the new issues of data and all other things are coming. So basically this right would be like the right to life and liberty, and then freedom of speech and expression. These are two very contested rights. Okay, so there are other fundamental rights also. So let's again, as I have discussed, it is very difficult now to teach just fundamental right. It take मतलब बहुत सारे lectures लगते हैं. ठीक है. So we are just going to glance through it. I will just mention the topics which are very important, and while reading the Lakshmikant you should give proper attention to that. ठीक है. So basically fundamental rights, so article 12 to article 35, these are the articles, the fundamental duties जो भी है, fundamental rights के सारे articles, DPSP के सारे articles, you must know. You must know these articles. Okay, keep this in mind. सो अगेन देर हैव बीन बहुत सारे कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. सो देर आर सम डिवीजन ऑफ सेवन राइट्स, राइट. राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 to 18. Then right to freedom, article 19 to 22. Then right to protect, right against exploitation, right, article 23 and 24. Then right to freedom of religion, right, article 25 to 28. Then cultural and educational rights, right, article 29 and 30. Then right to property, article 31, which is removed now. Now that is a legal right under article 300A, I think. And then right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, that is article 32. Article 32. Okay. So this is then features of fundamental rights. Very easy. Need not tell you. They are not absolute but qualified. There are some restrictions are there. So basically, regarding fundamental rights, I would say it is more about which type of restrictions are there. Though these are fundamental rights, from exercising these rights, what kind of restrictions are there? So the question lies here only, whether right to freedom of speech and expression, is that an absolute right or a qualified right. When we say the it is not an absolute right, so there must be some restrictions. उस पे restrictions क्या है? अगर ये absolute right नहीं है तो there must be some restrictions on it. तो restrictions क्या है? Question revolves around this only. Question revolves around this only. ठीक है. तो हमेशा जो भी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है. ठीक है. दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है. ठीक है. They can be suspended during the operation of national emergency. Now here I would like to bring your attention कि article except
the right guaranteed by Article 20 and 21. Right? They can be suspended during the operation of national emergency. And then जो छह राइट है, six rights guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war or external aggression. War or external aggression. जब internal emergency kind of thing होती है, जब arm, right? So not on the ground of armed rebellion. When there is armed rebellion, Article 19 cannot be suspended. So this is the exception. Now see, whenever even this type of mains question can be there, fundamental rights are not absolute. So when we say that fundamental rights are not absolute, then this is also one thing, that these can be suspended during the case of national emergency. So I accept the Article 20 and 21. So you see, these are very very small details, but you need to look at this. ठीक है, तो ये वाली चीजें आप ध्यान रखिए, and this can be used in the mains answer also. So I am again keep on telling that writing mains answer is not just reading some information and writing the mains answer. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं that you need to process all the information and on the basis of that you have to compile your answer. ठीक है. So in that, two articles are very important. Article 12, that is definition of state. Definition of state. Now state क्या होता है? Because these rights are available against the state. These rights are available against the state. ठीक है? There are few rights which are available against the individual also, such as right against untouchability. If any individual also professes the untouchability, that individual can be punished. ठीक है? So these rights are against the states. That's why we need to define the state, which has been done under Article 12. Under Article 12. So क्या है? Government and Parliament of India, that is executive and legislative organs of the union government as well as the state government. ठीक है? Then all local authorities, that is municipalities, पंचायत, district board वगैरह, इसमें कोई ज़्यादा logic नहीं है, but you need to know what do we mean by Article 12, that is state. And then there is uh, laws inconsistent with fundamental rights, and the term law, which is defined in Article 13. I would strongly recommend you to read actual bare act. bare act मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, not just Lakshmikant, but you can download any app on which you can get the constitution, but I always keep bare act with me. So constitution का bare act आप देखिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13, ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी यू शुड रीड इन द आर्टिकल. आई वुड से whatever you are under learning in the polity, you should once, at least once, you should read that particular right. ठीक है. Then what is Article 13? जो laws है, वो laws क्या है? That is basically Article 13. Then fundamental rights क्या है? Right to equality में क्या आता है? Equality before law and equal protection of law. Then prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth is prohibited. Then equality of opportunity in the matters of public employment, that is Article 16. Then abolition of untouchability article, abolition of the titles, Article 18. Then right to freedom of speech and expression, and then there are 6 rights in that, Article 19. Then right against respect of conviction, protection in respect of conviction for offenses. So अगर कोई offense में आप convict होते हैं, तो उसके उसमें आपको प्रोटेक्शन, नॉर्मल सिटीजन को क्या प्रोटेक्शन है. दैट्स व्हाई आर्टिकल 20 and 21, आर्टिकल 20 and 21 इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी आल्सो, except article 20 and 21, all the rights are suspended, but 20 and 21, that is right in case of protection of the protection in respect of conviction for offenses, and right of life and liberty, which is article 21, these two rights are not suspended. Then right to elementary education, which has been introduced by 86th constitutional amendment. You need to know also, I would say, basic constitutional amendment जो important है, 42nd, 44th, 86th, जितने भी important constitutional amendment act भी हुए हैं, at least by that what has been introduced in the constitution, or if something has been eliminated from the constitution, you need to know that. Okay. Then I have told this. Then fundamental rights which are available only to the citizens, that is 15, 16, 19, 29 and 30. 15, 16,
19, 29, and 30, these are only and only available to the citizens of this country. Citizens of this country. Then all other fundamental rights, they are available to citizens as well as foreigners. जो हम बोलते हैं कि person, it applies to person. So let's come. We'll go right to right. I think in this today's lecture we may not, it may not be possible to cover everything, but we will try to go till Article 21. We will try to go till Article 21. So equality before law, which is an American concept, sorry, British concept, right? Equality before law is a British concept. So and उसमें क्या है? The first concept क्या बोलता है? Absence of any special privileges to any person. Equality, everybody is equal before the law. Everybody is equal before the law. Law के सामने सब equal है. Okay, so there is no special privileges to anyone. Equal subjection of all the persons to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. मतलब क्या होता था, ब्रिटिशर्स जब थे तो ब्रिटिशर्स के लिए कुछ अलग लॉ होता था एंड इंडियंस के लिए कुछ अलग लॉ होता था बिफोर इंडिपेंडेंस आई एम स्पीकिंग. और इन अदर कंट्रीज, लेट्स से अमेरिका में, एनी अदर कंट्रीज में क्या होता था, इट वाज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर एवरीबडी, देयर वाज डिफरेंट लॉज वर देयर और पनिशमेंट वाज आल्सो डिफरेंट. So everybody was not subjected to the equal protection, equality before law. But that has been eliminated, and this equality before law has been introduced in our constitution. So this is the this is the concept which has been borrowed from British Constitution. And इससे आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ. सो लॉ इज द किंग. Law is the king, not any person. Law is the king. Whatever the law says, that would be implemented. That would be implemented. ठीक है. तो सो मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है क्योंकि वहां पे लॉ है. सी व्हेनेवर आई डिफाइन समथिंग विथ लॉ, क्या है रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है. सो इफ देयर इज अ लॉ, लेट्स से टेक एनी एग्जांपल, let's say there is one building, there is a law to enter that building कि आपको कोई वही बिल्डिंग में एंटर करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस जमा करनी है, 10 रुपए जमा करनी है. नाउ एवरीबडी, you are anyone, you are anyone, but you have to put that 10 rupees. You have to put that 10 rupees. ठीक है. So that is everybody. Whenever you are entering the temple or anything or any building, let's say I make the rule or law, I make the law, parliament passes the law कि भाई 10 रुपए देने हैं तो 10 रुपए देने हैं. ठीक है. No special treatment given to anyone. Okay. The primacy of the right of the individual, that is the constitution is the result of the right of the individual as defined and enforced by the courts of law. तो इसमें थर्ड वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हमारे इसमें पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, बट और मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पे बहुत सारे जो पार्लियामेंट भी एक्ट करती है उसमें थोड़ा सा रिव्यू करता है. ठीक है. देन द सेकंड कॉन्सेप्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज द अमेरिकन कॉन्सेप्ट. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज द अमेरिकन कॉन्सेप्ट. इज द अमेरिकन कॉन्सेप्ट. ठीक है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कॉन्फर्ड एज वेल एज द पनिशमेंट गिवन. कोई इक्वल इसमें है. ओके. तो उसमें इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा. ठीक है. The exceptions of equality. Now see, whenever I tell you that these are not absolute right, that means there would be exceptions. There would be exceptions to this. ठीक है. तो क्या exceptions है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इक्वालिटी बिफोर लॉ. हमने क्या बोला? इक्वालिटी. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस सच एज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर जो है ना, उनको एक्सेप्शंस है कुछ रिस्पेक्ट में, which is mentioned in Article 361 and then in the case of governor as well. ठीक है. तो वो आप पढ़ लीजिए. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट. ओके.
Then Article 105, right? No member of parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by her or him in the parliament or any commitment thereof. अगर उन्होंने कुछ बोला है या अगर कुछ कहा है विच इज डेल्ट सोनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द कोर्ट. ठीक है. तो आर्टिकल ये सारे एक्सेप्शंस आप देख लीजिए विच यू कैन सी. आई एम नॉट गोइंग डिटेल इन दैट. देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड which is article 15, prohibition of discrimination on certain ground. मतलब which are the grounds on which discrimination cannot be done. That is religion. आपका कोई भी रिलीजन हो बट देर आर फ्यू थिंग्स विच कैन नॉट बी इन विच यू कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ओके. सो डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डन. इसमें दो वर्ड है. स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली. ओनली, ओनली पे फोकस करिए. ठीक है. The use of the word only connotes the discrimination on other ground is not prohibited. Discrimination on other ground is not. मतलब other ground क्या होता है? Other ground may be your marks, एक academic criteria हो सकता है. मुझे एक institution में admission के लिए I can put any academic criteria. Any academic criteria. So that is one of the criteria. Right? That is one of the criteria. So other grounds of discrimination can be there. But you cannot discriminate any person on the ground of race, religion, caste, sex. Okay, जो भी है. But there are exceptions again the rule of non-discrimination. ठीक है. State is permitted to make any special provision for women and children. Women and children. जैसे हम कुछ सीट्स रिजर्व करते हैं, राइट? कोई पब्लिक बस में सीट रिजर्व कर सकते हैं, कोई स्पेशल रिजर्वेशन कर सकते हैं. State is permitted to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. Socially and educationally backward classes. This is a very, very important term. Socially and educationally backward classes people or scheduled caste and scheduled tribe, such as reservation of seats in the educational institutions. Reservation of the seats in the educational institution. So this has मतलब उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि yes, for the advancement of these sections there are some reasonable grounds on which some exceptions have been given. ठीक है. तो ये वाला जो ओबीसी वाला भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्रीमी वगैरह आता है. देयर वोंट बी एनी मेंस क्वेश्चन, कैन नॉट बी आस्क्ड ऑन दिस, बट यू जस्ट रीड फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि हाँ क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है. सो यू व्हेन दे कैन आस्क द क्वेश्चन कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, मतलब इसमें ये नहीं है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, यू कैन जस्ट टेल दिस थिंग्स. तो देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट like this only. Okay, they should not be prohibited on the basis of only religion, race, caste, only sex, decent place of birth or residence. ठीक है. लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं. ओके, इसमें भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं. पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब द रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. मतलब पार्लियामेंट कुछ बोल सकता है कि ये जॉब के लिए दिस पर्टिकुलर ये एक्स एरिया से ही हम लोग लेंगे. सो पार्लियामेंट कैन पुट दैट रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ. बाय लॉ. दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 35 आल्सो. ये आर्टिकल 35 में भी मेंशन किया गया हुआ है. ठीक है. State can provide for reservation of appointments or posts in favor of any backward class that is not adequately represented in the state services. ठीक है. तो ये वाली चीजें जो है, उसके बाद मंडल कमीशन जो ओबीसी का रिजर्वेशन आया, so that related to that, what all this, you just go through it. You again, I don't think that they can ask question on this, but you can just go through this. ठीक है. आप एक बार इसमें go through कर सकते हैं. Then abolition of untouchability. Abolition of untouchability, that is Article 17. Article 17. It is against the state as well as against the individual. It is against the state as well as against the individual also. Against the state as well as against the individual. Then protection of civil right act, वो एक्ट का नाम अभी चेंज करके जो नया वाला रखा है, राइट? नहीं, राइट, आई थिंक दैट
न्यू एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। जो ऑफेंसेस 2016 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, 2016 दिस एक्ट आई थिंक, हाँ 2016 में कुछ उसमें अमेंडमेंट करके और भी ज्यादा जो एस सी एस टी राइट टू मतलब प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी कुछ जो 2016 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट। देन इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं है, दे कैन, आई डोंट थिंक दैट दे विल आस्क एनी क्वेश्चन। देन abolition of titles, that I think some case is related to this, बालाजी राघवन और समथिंग रिलेटेड टू दैट। abolition of titles क्या हुआ, ये एक बार देख लिए। द मोर इम्पोर्टेंट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, freedom of speech and expression. So there is protection of six rights: right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully and without arms, right to assemble peacefully and without arms. When you will become magistrate, now there is like under the CRPC, we get magisterial power, we get magisterial power, and there is CRPC में बहुत सारे provisions है जहाँ पे आपको ये magisterial power use करनी पड़ती है। So if there is no peaceful assembly, then Article 144 is implemented, right? जो हम कर्फ्यू बोलते हैं, नॉर्मल वर्ड्स में जिसको हम कर्फ्यू बोलते हैं, वो सेक्शन 144 होता है, सेक्शन 144 होता है, राइट? Then right to assemble peacefully and without harm, right to form association or unions or cooperative societies, ठीक है? Then right to move freely throughout the territory of India. I think cooperative societies का एक कुछ एक्ट हुआ है ना, something related to that, something has been changed, something has been changed related to cooperative societies or cooperative something act or some I think this something is related to that, something has come, you just uh, focus on that. Then right to move freely throughout the territory of India, throughout the territory of India, again there are some reasonable restrictions. Then right to reside and settle in any part of the territory of India, again there are this that जो अंडमान निकोबार है या नागालैंड का कुछ पोर्शन है, वहां पे आपको नहीं, मतलब यू कैन नॉट स्टे देयर और यू कैन नॉट बाय प्रॉपर्टीज देयर, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सो दीज राइट्स आर देयर, ओके? जो 6 राइट है, बट मोर देन दैट व्हाट यूपीएससी इज इंटरेस्टेड is to ask what are the restrictions on this. Though these rights have been given, though these rights have been given to the citizens and only citizens of the country, article 19 is only to citizens and not to the foreigners. तो ये जो राइट हमने दिया है, सो इसके बाद हमारे पास क्या, मतलब उसके जो राइट दिया तो है, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें क्या है? देन it implies that every citizen has the right to express his views, opinions, beliefs, conviction freely by the word of mouth, writing, printing, picturing or any other form or manner. इसमें बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, because there is always a debate about freedom of speech and expression. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, keep an eye on this, ठीक है? Then freedom of assembly, तो assembly, how this assembly should be there? It should be peaceful, it should be without arms, and if there are arms are there, उसके बाद उसके उसके ऊपर एक्शन कैसे ली जा सकती है, दैट इज सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल सीआरपीसी। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो आप एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, उसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, जस्ट सी दोस थिंग्स, ओके? देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ओके? देयर इज देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस पे क्या है? Rights has two parts: the right to reside in any part of the country, which means to stay at that place temporarily, or right to settle. तो इसमें भी जो है, to protect these rights of these tribals or conserve them, then there are some reasonable restrictions are there. Then freedom of profession, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एमबीबीएस विदाउट पासिंग एमबीबीएस आप दवाखाना खोल लेंगे, आप हॉस्पिटल खोल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। फिर तो दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी दिस doctors which are there, quacks are there, no? So state has put some condition, state ने क्या किया है कि they have put some condition कि आपने ये एग्जाम पास करनी है, तभी हम आपको प्रैक्टिस करने देंगे, राइट? सो दैट इज देयर, that is freedom of profession. Then this so you just go through the restrictions on this, restrictions on this, ठीक है?
Then protection in respect of conviction for offenses. That is Article 20. Protection in respect of conviction for offenses. See, what is my purpose is I would like to make it in simple terms to make you understand. मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ. सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई क्राइम कर लिया और आप 10 महीने बाद एक एक्ट बना रहे कि आपने 20 जुलाई को वो क्राइम किया था, तो तब तो वो मतलब देयर वाज नो लॉ टू पनिश दैट, बट नाउ वी विल फॉर्म अ लॉ टू पनिश दैट. ओके, और यू कैन नॉट से समथिंग लाइक कि आपने जब उस क्राइम किया था तब उसकी पनिशमेंट थी 10,000 रुपए, लेकिन आज मैं नया एक्ट बनाऊंगा और उसकी पनिशमेंट दूंगा 20,000 रुपए. ओके, सो देयर कैन नॉट बी समथिंग विच इज एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब एक्ट होने के बाद आप कोई क्रिमिनल लॉ नहीं कर सकते. बट दिस अप्लाइज टू ओनली क्रिमिनल लॉ. This applies only to the criminal law and not to the civil or tax law. मतलब आज अपने टैक्स की चोरी करी है तो मैं 10 साल, 1 महीने, 2 महीने, 10 साल, 1 साल, 2 साल के बाद भी एक एक्ट बना सकता हूँ जिसके बारे में बोल सकता हूँ कि आपने तब टैक्स नहीं भरा था, अब आप भरिए टैक्स, आप अब टैक्स भरिए. ओके, डिड यू गेट इट? दैट इज दैट. नो डबल जेपर्डी. नो डबल जेपर्डी मतलब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस. आपने कोई एक सेम ऑफेंस किया है, एक मतलब कोई एक ऑफेंस है, जैसे किसी ने मर्डर किया हो, किसी ने मर्डर किया हो, तो मर्डर से रिलेटेड कोई क्राइम है कि मतलब अभी इसमें अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. सो सेम ऑफेंस के लिए मतलब आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर एग्जांपल, बट मर्डर करते हुए आपने चोरी भी की है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्राइम. चोरी इज अ डिफरेंट क्राइम, मर्डर इज अ डिफरेंट क्राइम, राइट? सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन टाइम आप पनिशमेंट कर नहीं कर सकते, राइट? तो सेम ऑफेंस आपने मर्डर किया है तो एक बार ये कोर्ट में सजा दी गई 10 साल और एक बार वो कोर्ट में. ओके, दैट कैन नॉट हैपन. ओके, बट अगेन इट अप्लाइज टू ओनली क्रिमिनल लॉ. बट यू नो सम लाइक, बट आपने कोई ऑफेंस किया है, जैसे मर्डर किया है, सो इफ देयर इज वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने मर्डर किया है, सो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में तो केस होगी ही होगी, बट वो पर्सन के अगेंस्ट his department, let's say if there is a person who is employed in department, that department can also do the departmental inquiry and they can punish. उनको सस्पेंड कर सकते हैं, डिबार कर सकते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कर सकते हो. ठीक है. देन there is no self incrimination. Okay, no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself. मतलब आप वही बंदे को मार पीट के बोल नहीं सकते कि तुम ही बताओ, मतलब मैं डंडे के डर से तो कोई भी बोलने लगेगा. So this protection has been given. This protection has been given. Okay. लेकिन उसमें क्या है कि आपके फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे. आपको कोई अगर कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, उन्होंने बोला कि भाई आपके घर में ये मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये गन रखिए, ये रखिए, आपको वो देना पड़ेगा. ठीक है. कोई फिंगरप्रिंट मांगे, कोई डीएनए मांगा है, वो देना पड़ेगा. ये सब चीजें देना पड़ेगा. Then there is last right which we will see today, Article 21. Article 21. Article 21, that is protection of life and personal liberty. Protection of life and personal liberty. There are two concepts in this: procedure established by law and due process of law. Procedure established by law and due process of law. So, procedure established by law means it is a very literal sense. It is a very literal sense. Procedure established by law मतलब आर्टिकल 21 में ऐसा है कि देर इज राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. देर इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज अ वेरी वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट. तो अगर मतलब मैंने कोई लॉ फॉर्म किया है जिसकी प्रोसीजर मैंने फॉर्म नहीं करी है, जिसकी मैंने प्रोसीजर फॉर्म नहीं करी है, एंड इफ यू वायलेट दैट लॉ, तो उसका मतलब मैंने अगर प्रोसीजर ही फॉलो मतलब प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए, तो दैट लॉ कैन बी टर्म्ड एज इनवैलिड. दैट लॉ कैन बी टर्म्ड एज इनवैलिड बाय द कोर्ट. दैट लॉ कैन बी टर्म्ड एज इनवैलिड बाय द कोर्ट.
बट दिस इज अ वेरी लिमिटेड, मतलब ये बहुत एक लिमिटेड हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैंने कोई लॉ है विच इटसेल्फ कैन बी वेरी इलीगल। मतलब ऐसा कोई लॉ है जो खुद से इलीगल है, या खुद से मतलब उसने मतलब फेयर नहीं है, अनजस्ट है वो लॉ, फेयर नहीं है वो, अनजस्ट लॉ है। एंड दैट लॉ बट इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, मतलब वो एकदम सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, मतलब पार्लियामेंट में पास किया है। एंड दैट लॉ इज रेस्ट्रिक्टिंग सम आइडिया, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि राइट टू प्रिवेसी है, नाउ राइट टू प्रिवेसी हैज बीन टर्म्ड एज कि इट इज अ फंडामेंटल राइट। तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ लॉ ला रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हो सकता है, उसके अगेंस्ट कोई जा सकता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट कैन से दिस लॉ इज इनवैलिड। दैट इज कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मीन्स वेदर द लॉ इज फेयर, वेदर द लॉ इज फेयर, वो लॉ फेयर है कि नहीं, वो लॉ जस्टिस कुछ करता है कि नहीं। ठीक है। सो दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज वाइडर इम्प्लीकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया मनेका गांधी केस में 1978। सो एके गोपालन केस जो थी, एके गोपालन केस, सो सुप्रीम कोर्ट टुक वेरी लिमिटेड व्यू, सुप्रीम कोर्ट टुक वेरी लिमिटेड व्यू इन द एके गोपालन case, but in the case of maneka gandhi case, which was in 1978, supreme court took the wider interpretation of that, and supreme court said कि हाँ, इसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। So that is more about that. And then under article 21 there are so many lists, that is right to sleep, right to marry. So in 2018 or 2019 prelims, the 2019 prelims, I think they asked right to marry comes under which article of the constitution, right to marry comes under which article of the constitution. So they ask that question, this type of, मतलब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, कल हम बाकी वाले जो फंडामेंटल राइट्स है, वी विल सी देम टुमारो। सो बेसिकली क्या है आर्टिकल 12, अगेन आर्टिकल 12 जो है स्टेट, राइट, इट डिफाइंस स्टेट। आर्टिकल 13 इट डिफाइंस लॉ। आर्टिकल 14 is equality before law and equal protection of law. Article 15, prohibition on on certain grounds. Then Article 16 is prohibition on certain ground in case of employment. Right. Article 17 is right against untouchability. Right is Article 18 is abolition of the titles. Right. Article 19 is freedom of speech and expression. Article 20 is protection in case of certain offenses. Then conviction, I think conviction in some offenses. Article 21 is freedom of speech and expression, right to life and liberty. ठीक है। सो दैट इज द केस। ये वाली चीज पढ़िए। इससे रिलेटेड, हाँ मतलब इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू, दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस, एंड tomorrow we will see those remaining rights. ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।